जॉन मोर्स की रेजिमेंट उन चंद फौजी दस्तों में से एक थी जो इस खून खराबे को रोकने की कोशिश कर रही थी। All the time by hand, written messages. I can remember one, it was a rather sad, pathetic note by some chap who could write a little bit of English. And he had been in the Indian Navy. And on a scrap of paper, this came in one day saying, I'm home on leave at this particular village. And my name is so-and-so, my number is so-and-so. Please, can you come and help us? We are going to be attacked. But by the time we located the village, we got there and the village had been attacked, and I couldn't find this man. A lot of people were killed. So it was that sort of message. It was sad, you know, people desperate for help and knew where we were. But when I say we were only 100 people. I mean, the whole area was something like, what, 50,000 square miles? One village I went into, we knew there was something afoot. I hadn't been told to go there. I was coming back at the end of the patrol, and I saw vultures circling, and so that was usually a pretty good indicator. And got into the village, and sure enough, it had been completely decimated. The well was full of bodies. One woman had been pregnant, and she'd been carved open completely, and breasts had been cut off, and awful atrocities. वहाँ लाहौर में मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों और दुकानों को आग लगाना शुरू कर दी ताकि हिंदू डर के लाहौर छोड़ दें। कत्लो गारत अब पूरे पंजाब में रोज का मामूल बन गई। 9 अगस्त 1947 को सिरिल रैटक्लिफ ने बॉर्डर बनाने का काम ख़त्म कर दिया, लेकिन माउंटबेटन ने दोनों मुल्कों के आज़ादी के दिन तक बॉर्डर लाइन को राज ही रखा। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी फसाद का जिम्मेदार अंग्रेज़ी हुकूमत को ठहराया जाए। बॉर्डर लाइन्स के पता चलने पर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों ने इंडिया जाना शुरू कर दिया, और इंडिया में रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ मुसलमान हवाई जहाज़ के ज़रिए खैरियत से पाकिस्तान पहुंच गए, और बाकी लाखों मुसलमान पैदल या ट्रेन के ज़रिए पाकिस्तान आए। अमृतसर से बॉर्डर क्रॉस करने वाली ट्रेनें सिख मुसल्लह जमातों के लिए आसान निशाना थीं। बॉर्डर के करीब स्टेशंस पे सिख इन ट्रेन्स का इंतज़ार किया करते थे। इन ट्रेनों में से एक ट्रेन जॉन मोर्स ने पाकिस्तान पहुंचे। It wasn't a train, it was just a lot of coal wagons, steel coal wagons, and this of course is August, which is pretty hot. And we loaded up these wretched refugees. Amritsar station was crawling with, it was packed, it was like sardines, right across, not just the platforms, but across the tracks. They all had weapons of some sort or another. Some were old blunderbusses, some were fairly modern rifles, spears, swords. They were shoulder to shoulder crowds, and pushing and shouting and screaming, and you realized that you were just going into a hell, and if you didn't look tough, you were for trouble, because they would then have gone for us before the refugees. And I said the thing to do is to get the grenades out, let them see. A lot of them are ex-soldiers, these people here, the weapons they were carrying. Let them see you priming grenades, prime the grenades, and that they'll know you mean business then. And doing that, the crowd sort of melted back and away and left us clear. And I suppose we must have been in the station for about 4 hours, something like that. फौजी दस्ते बहुत कम ट्रेनों पर मौजूद थे। बाकी ट्रेनें वहशत और हैवानियत का शिकार बन गईं। अंबाला स्टेशन पे जॉन मोर्स को एक दूसरी ट्रेन पर बुलाया गया। This was a trainload of, I don't know, 500, 600, 700 people.
most of whom had been killed, slaughtered, mainly elderly people, young children, young women, and they had been attacked and slaughtered, shot. I can remember seeing a young woman with she was still alive, her head open, cut open, and you could see her brains, and knew there was nothing that we could do. We hadn't got any surgical facilities or anything like that, but it was a horrendous thing, and I still think about it very much. आर्ट्स स्टूडेंट सतीश गुजरल रेफ्यूजी ट्रांसपोर्टेशन को ऑर्गेनाइज करने में मदद कर रहे थे। अमृतसर में उन्होंने उस हैवानियत को देखा जो सिखों के दिल में मुसलमानों के लिए थी। The Muslim girls' school nearby had been raided, and all these girls had been brought out, stripped, then taken in procession to this location, where they were being systematically raped. I have recalled in my life story that when watching it, I looked at the face of those others who were attending it in search of compassion. I found none. तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों ने इंडिया से पाकिस्तान का सफ़र किया, जिनमें से 50 लाख पाकिस्तान पहुंच ही ना पाए और अपने माल, माँ बहन और बेटियां, अपनी जान, सब कुछ पाकिस्तान बनाने की कीमत के बदले चुका बैठे। उन्होंने ये भी ना पूछा कि पाकिस्तान में उनकी रिहाइश और रोज़गारी का क्या निज़ाम है, और ना ये सोचा कि इस पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है और इस पाकिस्तान ने हमें क्या देना है। वो सिर्फ ये जानते थे कि अब ये उनकी अपनी सरजमी है, जहाँ उनकी आने वाली नस्लें आज़ादी से एक अच्छा मुसलमान बन के रहेंगी। ये जानने के बावजूद कि रास्ते में ही काट दिए जाएंगे, मुसलमान बार बार पैदल और ट्रेन के ज़रिए पाकिस्तान जाते रहे। 26वां रोज़ा और 27वीं शब, जुम्मतुल विदा का दिन, 14 अगस्त 1947। अंग्रेज़, हिंदू और सिखों की लाख कोशिशों के बावजूद अल्लाह के फजल से पाकिस्तान क़याम में आया। Through Karachi's streets drives the Azaad, Muhammad Ali Jinnah, Pakistan's first Governor-General. It's Karachi's first day of independence, and the crowds are out to greet him and Earl Mountbatten. माउंटबेटन पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर करने के लिए कराची आए और कायद-ए-आज़म के साथ इस खास तकरीब में हज़ारों पाकिस्तानियों ने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा। It never occurred to us that the Muslims of India will ever see the emergence of a sovereign, independent country, which they could call their own, you see. A country they could live for, a country they could die for, you see. It never occurred to us. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को बनाया गया।